flow chart in the following series. You see that? What is the series actually? So start I is equals to 0, n is equals to 0, I is equals to 0, n is equals to 0, n is equals to 32, n value is equals to 32. Okay, n is 0 is equals to 32. No. So n is equals to 2 to the power 0. 2 to the power 0 is 2 to the power 0 is 0. The value of 2 to the power 0. No, 2 to the power 0 is 1. Okay, so 2 to the power 0 is 1. So your value is now what? Output is 1. So यही पार्ट रे हमर कौन आसला ये जो सिनेरियो रे 2 to the power 0, n is 2 to the power 0. So 2 to the power 0 is 1. So display 1. I is equals to I plus 1. So I रे value केते होछ 0 होछि. तो 0 plus 1 1 हला. तो n रे value केते होछ 1 होछि. तो 1 is equals to 32. 1 is equals to 32. No. So n is equals to 2 to the power 1. So n is equals to now 2 to the power 1. 2 to the power 1 is now 2. Okay, I value is again increment. I value केते होछ 1 अछि. 1 plus 1 हे गला 2. So 1 plus 1 जेता हे गला 2. तो एटी आसी गला केते n नो value केते हे गला n नो value केते अछि n नो value केते अछि एटी पर n value देखौ 2. Okay, so 2 is equals to 32. 2 is not equals to 32. बुझी होछि ना बुझी पन तो 2 टा 32 सहित इक्वल नहीं. जदि इक्वल नहीं तो एटी देखेला 2 is equals to 32. No. जदि no, n is equals to 2 to the power केते अछि 2 अछि. तो 2 to the power 2 केते हे गला 4. तो 4 एटी डिस्प्ले I value again increment हला. increment 2 रो हे गला I is equals to 3. So I value is now 3. I value is 3. So 4 is equals to 32. 4 is equals to 32. No. Then n is equals to 2 to the power 3. 2 to the power 3 हला केते हला 8 आसिला. Then I is equals to I plus 1. I is equals to I plus 1 हला केते हे गला I द value हे गला 4. Then condition check हबो 8 is equals to 32. No. Then n is equals to 2 to the power 4. 2 to the power 4 हला केते आसिला 16 आसिला.
ओके देन हमर चेक हम I इज इक्वल टू I प्लस 1 I रा वैल्यू हेगला केते 5 हेगला ओके तो व्हेन इट इज 5 तो 2 टू द पावर 5 हेला केते हेगला 32 माने 16 इज नॉट इक्वल टू 32 देन 2 टू द पावर 5 हेगला 32 I टा कोन हेगला पुनी इंक्रीमेंट हेगला 6 ओके देन n नो वैल्यू चेक हो 32 इज इक्वल टू 32 if condition false then display the result is over result बुझियला that is a series of what factor I mean factor भी कोई परियो not factorial factorial okay so draw it what next we go for pseudocode pseudocode is called as the false code the pseudocode is used to represent the logic of the solution to a problem it is used to represent the statement okay नै इटा गोटे सेट ऑफ गोटे कीवर्ड सब आ पाखरे अछि तो कमांड अछि ए कमांड को यूज करके हमें
false code लिखो, it is a pre format of your coding, that is called false code. The pseudocode at first हमें use करते double hash is used to represent the comment entry. Comment entry is used to provide the additional information about the step. इस step टा में कहीं के लिखूं, तारा instruction दबा पे हमें double slash use करूं. ओके, हमें तरह कोडिंग प्रोग्राम पार्ट में तरह डेवलपर होगा, रियली जैसे सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करेगा, बहुत सारा कोड सब लिखा हुआ है. तो प्रत्येक लाइन में कोडिंग का माने एटा भी हे करे गोटे लोक आज काम करते आज ता देह खराब रास करला तमने मो काम रहइबो एटा आउ जन का जगह काम करू सेते पई जोडा क्रिटिकल कोडिंग गुडा लिखाई जाय सेते गोटे स्लैश देख लिखा जाय मेंशन करा जाय एटा होची नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. द प्रोग्राम का रन हो एटा आ ए बिना ऑपरेशन में आर कुछ ऑपरेशन ना किंतु एटा गोटे इंस्ट्रक्शन दो आउ जने एटा देखि जानि करे जे लिखा लिखा लेबलिंग करे हमें पहिले जो गारा मारुचे इंपोर्टेंट है कि गोटे डिफरेंट कलर दोचे दैट मींस व्हाट सेटा का हमर सेटा में इंपोर्टेंट बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बुक रे सेम लिखा जाय ना बुक रे कहते सब इंपोर्टेंट बट वी हैव टू मेंशन सो दैट इज फॉर द कमेंट बुझियरा. pseudo code जेता स्टार्ट हो तो वी हैव टू राइट द बिगिन एंड एंड स्टेटमेंट. ओके, जेंति कि हमें फ्लो चार्ट रे यूज करले कोन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन एलिप्सिस पास करले एटी हमें पास करबा बिगिन एंड एंड. So flow chart is starting with what? So when we write the flow chart, suppose when we do the flow chart, it is a starting symbol and it is a end symbol. It start and it is end symbol. Okay, so we are defining start and end symbol in the flow chart. Okay, but here what happened when you are working with pseudocode. In pseudocode we pass your begin and end statement. We pass begin and end statement. So begin and end statement is used to passing the statement. Okay, so begin and end statement is used to pass the to write all the statement of the pseudocode. Okay, आ भीतर हमर सब पार्ट्स गुडा का लिखा जो begin और end बुझले आगे. So next is we are writing here accept statement. Accept statement is used to accept the input from the user. User थारो किछि वैल्यू accept करे पे हमें accept statement यूज करियो. किछि इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करे पे हमें डिस्प्ले लिखियो. कंडीशन चेक पे हमें यूज करियो if and else statement. So it is refer to the decision construct. It is used when depending upon the condition. Different action may have to be taken. Okay, first of all accept is used to take the user input. User थारो किछि वैल्यू नवा पे हमें accept यूज करियो. डिस्प्ले हमें यूज करियो किछि जिंस डिस्प्ले करियो पे हेले स्क्रीन ने किछि जिंस प्रिंट करियो पहले डिस्प्ले यूज करि परिबो. if and else is used to refer to as a decision making construct. हमें जदि किछि डिसीजन नबा if and else construct यूज करियो बुझला. तापर हमें यूज करिवा व्हाट लाइक रिपीटिंग स्टेटमेंट. हमें जदि कोनोसी स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करियो चाहूचे तले हमें रिपीट एंड अनटिल यूज करियो. रिपीट एंड अनटिल इज यूज्ड so it is acting as an iterative statement. Iterative statement means repeat a statement. While loop, it is an initiative construct with a condition at the top of the iterative statement. So repeat until, while loop, for loop, eta hochi tinita construct ba tinta method eta use kara jaye. हमें जदि कौन से स्टेटमेंट को रिपीट करियो को चाहूचे tinta यूज करियो. तापर होची कॉल सबरूटीन. कॉल सबरूटीन मींस हमें जते गोटे कॉम्प्लेक्स टैक्स गोटे बड़ प्रोग्राम करूचे तो आज ए पर्टिकुलर पर्सन गोटे लोक आपको हैंडल करि परिबो नाही. तो सेति में हमें यूज करबा कोन कॉल सबरूटीन. कॉल सबरूटीन हेले हमें प्रोग्राम टाको गोटे छोटो छोटो पार्ट रे डिवाइड करबा और में
जो पर्टिकुलर पार्ट अछि से पर्टिकुलर पार्ट को हम रिट्राइव करबो सेटा होची कॉल सबरूटीन हम करबो तो write this pseudo code. So first you write double slash okay. So we're using double slash. So double slash is used for passing a comment or you can say instruction about code. It is not executed. Instruction about code and it is not executed. Okay. So next we are using begin end statement. So why it is used? All instruction are written inside begin and end. So all instruction are written inside begin and end. Then next is accept statement. Accept statement. Accept statement. It is used to accept input from user. It is used to accept the input from user. Then we're using display statement.
display. It is used to display information it is used to display information on screen. Okay. It is used to display information on screen. Then we're using subroutine. It is used it is used to display sorry, it is used to divide complex program into smaller part. It is used to divide complex program into smaller part. Then we're using looping construct or iterative construct. Looping or iterative construct. Looping or iterative construct. So what are the looping construct is present? One is for loop, while loop, do while loop. So three looping construct we are using. Looping means repeat statement. Repeat statement for more than one time. We are using looping construct. For loop, while loop, and do while loop.
Okay, so these are the three looping construct very easy. Yes, we are defining a pseudocode for adding the two numbers. For adding the two number, we are defining a pseudocode. One is begin, end. You have to add two numbers, begin and end. Okay. Then, first of all, you have to define data type. Numeric n norm1 n norm2. Okay, means for adding the two number we define two memory allocation, numeric n norm1 and n norm2, then n result. Okay, then first it is asking you display enter first number, display enter first number, then accept n norm1, then display enter second number, then accept n norm2. So end result is equals to n norm1 plus n norm2. Then display the result is plus n result. So first of all, what to do? Numeric n norm1, n norm2, and n result. Display enter first number, display enter second number. Okay, enter first number, then accept. Okay, हमें display करिवा, then value को accept करिवा. Accept करिया पे हमें display कले user value दला, एटी हमें accept कले value जेतला हमें accept करूचे again कौन होची? पुनी display enter second number हमें pass कले, then accept number 2. तापर हमें number दिटा को add करिवा, result equals to norm1 plus norm2. तापर हमको एटे result show कर. बुझेला? हाँ. बुझेला? Okay, right.
So next, where does the execution of the pseudocode start from? Yes, it is a begin statement. The first part is the next program level.